Hello friends, welcome to Smart Learning. Today we are going to learn about centralized database system and decentralized database system. Here are some important points are given. Let's see one by one. Centralized database system. Centralized database system. It means the data is stored in a single location, in a particular place, as you can say that. The first point is data is reside in a single location. And it does contain several sites or nodes that does not contain several computers. It it is stored in a single place. It doesn't contain several sites. It doesn't contain any other places. It is stored in a single places and in a single computer, which was remotely accessed by other user or a client. There is no data sharing facility. It means the data can be shared to others. It works or it is provided by in a single organization or in a particular place. Once the database system fails, it doesn't operate. As you as we know that the data is stored in a single place. The data is stored in a single place and it doesn't in a single device. When the device is failed, it doesn't operate. We can't access the data from the database as the device is failed because it is stored in a single device. If that device is failed, then how we going to access that data from that device? So it is one of the loopholes. And the fifth one is low cost. It doesn't require more cost to configure or managed. It requires less manpower. It requires less devices. No need of extra devices to store the data as it is stored in a particular computer which was accessed in a organizations. We can't share that data to a other organization. Decentralized database, it is means the data is stored in a multiple places. It contains several computer sites, nodes, communication medias. The data is stored in a multiple servers which was accessed by his clients. Another third point is doesn't required provide it doesn't provide
data, it does not provide data sharing facility. It means we can't share the data. If one site fails, the remaining site may be able to continue operating. If one site is failed, then other servers are in a working process. It it require high cost because multiple devices are needed to be installed, multiple manpower needed, more more persons needed to configure that device, to manage that device. Here, as you can see that here, this is the centralized database. Here, the in a single group, like as you see, the all the data of the clients is stored in a server, in a server, in a single server, and all the data are accessed by these devices. You you can, if this device is fail, then no one can get the data from the database. But in the you can see in decentralized database, the data is stored in a multiple servers and accessed by their clients. If one is failed, then other two will provide the data to its, as we, अगर हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की अगर हम बात करें, तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या होता है कि मतलब जो भी हमारा डेटा रहता है वो एक जगह पे स्टोर रहता है और एक ही जगह से वो सारी जगहों पर उसको एक्सेस किया जाता है। उस डेटा को हम शेयर नहीं कर सकते, मतलब किसी और को शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो हमारा एक सिंगल डेटाबेस अगर फेल हो जाए, तो जो उसमें डेटा जो है वो उस डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही हम ऑपरेट कर सकते हैं, ना ही मैनेज कर सकते हैं उस डेटाबेस को। जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रहता है उसमें कम खर्च होता है क्योंकि उसमें डिवाइसेस ज़्यादा नहीं लगती हैं, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसको मैनेज करें या फिर उसको कॉन्फ़िगर करें, बनाएं। उसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें ज़्यादा कंप्यूटर्स भी नहीं लगे होते हैं। बस एक सर्वर बना दिया और उसको मल्टीपल प्लेसेस पे उसको अलग अलग जगहों से एक्सेस कर लिया, उसे उसके जो भी डेटाबेस है उसको यूज़ कर लिया। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज डेटाबेस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो हमारा डेटा रहता है वो अलग अलग जगहों पे स्टोर रहता है और उसमें मल्टीपल्स कंप्यूटर्स लगे होते हैं जो हमारे डेटाबेस बेस को एक्सेस करते हैं और उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारा अगर इन केस अगर हमारा एक सर्वर अगर फेल हो जाता है तो बाकी के जो हमारे सर्वर्स रहेंगे वो उनको डेटा आराम से दे सकते हैं। मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या होता है कि मतलब अगर आपका एक एक सर्वर फेल हो गया तो बाकी के और भी जो भी सर्वर्स उसमें लगे हैं जिसमें डेटा स्टोर्ड है वो उस डेटा को दे सकते हैं। इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है कि थोड़ा उससे महंगा पड़ता है और उसे मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो centralized database and decentralized database, you understand this now. This much about centralized database and decentralized database. If you like this video, then